A very good evening, all of you. Okay. So, very good evening, all of you guys. So, let's start the session today. The continuation for the best problems on the digital network and unlock, that is the DNA series. So, let's start the session. Okay. So, if you want to access my free classes, you can just scan this QR code. You will be getting the access to all my classes of the Unacademy app, which are free for you completely. If it asks you a code, you can use my code Shankar 10. Right. So you can save up to 44%. Today is the last day to avail this offer, guys. So that is the extra months offer. That is, if you take 6 months, you get 1 month for free. If you take 9 months, you get 2 months for free. And if you take 1 year, 3 months, and 18 months, may 4, and 2 years, you will be getting 6 months for free completely. Okay. So you can take an Academy Light distance program where you can get the total printed notes and test series for free. You can use my code. You will get for 12,000 minus 10% discount. Okay. So let's start the questions. Let's continue our discussion with the this one. So there is a question from network analysis. So let's start with this question. Chalo. A very good evening. So today is the last day for this series, guys. We may take a pause for some time and we'll restart it maybe in the next month or somewhere. Okay. Any answer? Anybody last 5 seconds? No? Okay, fine. Leave. So here, it's a very simple straight away question, guys. To find the resonant frequency generally, what we need to do is you should find the admittance and make the imaginary part equal to zero. वो पूरा काम कर सकते हैं आप लोग, ज़्यादा टाइम लगेगा. इसके अलावा आप लोग ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लो. ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC root of RL square minus L by C RC square minus L by C. Here RL, L, RC and C. ठीक है, याद रख लो. इस क्वेश्चन पे RC तो दिया, RL तो नहीं दिया. सबस्टिट्यूट 0, RC दिया, RL इक्वल टू 0. रूट ऑफ माइनस 1/LC तो कॉमन ले सकते हैं आप लोग. -1/LC कॉमन ले लिया तो 1/1 माइनस R स्क्वेयर C/L हो गया काम. So 1/√LC. What is L into C by L into C तो 4. ठीक है. रूट ऑफ 1/1 माइनस RC स्क्वेयर C/L, that is 1/4. ठीक है. So that will give you 1/2 into root of 1 minus 1/4 is 3/4, that is 4/3. 2/2 root 3, 1/√3. So 2 cancels, 1/√3 रेडियंस पर सेकंड. हो गया काम. अगर कन्वेंशनली आपने सॉल्व करना चाहिए तो बहुत टाइम लगेगा. पूरा एडमिटेंस इक्वेशन लिखना चाहिए. इसमें इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके यूनिटी पावर फैक्टर वाला कंडीशन लेके फ्रॉम दैट यू नीड टू फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. Instead of that, simply
याद रख लो ये वाला फॉर्मूला एज ए स्टैंडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सर्क्यूट। इसमें आप लोग कोई भी समय पे कुछ ऑल्टर किया तो RL0 किया, RC0 किया, दोनों दिया, एनी केस में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर दिस पैरेलल R series with L and R series with C वाला सर्क्यूट। ओके, so shall we proceed further? You have any kind of queries, you always happy, be feel free to ask me. Next question. This is for electrical engineering students only because easy वाला बच्चों ये question तो है क्योंकि you don't have three phase circuits in your syllabus। ठीक है, चलो चलो come on, comment your answer यार, comment your answer। कमेंट्स तो लोड नहीं हो रहे क्या? बफर हो रहा है? नहीं यार, मेरा कनेक्शन तो स्टेबल दिख रहा है। आई एम वाचिंग माय क्लास ऑन माय मोबाइल, इट्स लुकिंग फाइन। नो आंसर, व्हाट हैपेंड यार? कोई कमेंट नहीं आ रहा है, क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या? एनीबडी प्लीज कमेंट। मेरे को कमेंट्स लोड नहीं हो रहे यार, व्हाट? व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम एनीबडी? पता नहीं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आई विल हेल्प यू। सो ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यू हैव ए आर फेज बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, राइट? सो आर फेज का वोल्टेज मैग्नीट्यूड कितना? 30 है, ठीक है। वाई फेज का -120 उस पर्टिकुलर समय पे। बैलेंस्ड बोले तो नॉर्मली द मैक्सिमम वैल्यू इज सेम इन ऑल द केसेस, बट आपको क्या चाहिए? एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चाहिए। what is the B magnitude? One simple concept here is suppose you stay बहुत दिन हो गया बैकग्राउंड यूज करके।
See, this is what your three-phase waveform looks like. ऐसा होता है another waveform. ठीक. Now you see, suppose this is the three-phase signal R, Y, B. Okay. Here at any instant of time, one thing will happen always. Okay. Sum of all the three will sum up to be zero. ठीक है. At any instant of time, if you add all the three, you get zero. Okay. Because of that 120 degrees phase shift between them. So if you use this common sense, directly you can solve the question. You need VB magnitude, right? So VB का magnitude is equal to negative sum of minus 90 plus 30. Directly give you 60 as the answer. हो गया question. Okay, yes, yes, okay, right. But instead of this थोड़ा सा mathematical analysis करके आपने problem solve करना चाहिए तो बहुत time लगेगा. I will show you that also. See here, you may take VM. कलर अच्छी नहीं. VM cos omega t equal to 90. Vm cos omega t equal to 90. Vm cos omega t minus 120 degrees equal to 30 at that instant of time t. Same instant पे you need to find Vm omega t plus 120 degrees. इसका वैल्यू निकालना चाहिए. ठीक है. से टाइम t इक्वल टू t नॉट. सो इसके लिए आपके पास एक टेक्निक भी हो सकते हैं. आप इसको एक्सपैंड करो यार. cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला Vm cos 120 degrees into cos omega naught t. ठीक है. माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin प्लस प्लस sin omega naught t into sin 120 degrees equal to 30 degrees. आप ध्यान से देखो, इसमें आपको Vm पता नहीं, cos 120 पता है, cos omega naught t, Vm cos omega naught t का वैल्यू पता है या नहीं पता? पता है ना? Already we know it because minus 90. Okay, sin omega naught t I don't know it. This I know it. So ये वाला expand करके, okay, solve किया तो you get from this Vm sin omega naught t equal to something you will get. From that you can find omega naught t का value. Then उसको यहीं पे substitute करके omega naught t substitute करके omega t naught और omega naught t whatever may be, okay, plus 120 degrees वाला निकल सकते हैं. But इतना ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए. आसान से just add all the three. They must be equal to zero is the concept you can apply because he said balanced. ठीक है. So आपका आंसर तो 60. चलो let's go for the next question. ये क्वेश्चन तो डिजिटल का है. Okay. Okay, Brahmendra, fine. Next question.
ऑप्शन A, D, 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 ठीक है. So mod 16 counter will repeat its sequence after every 16. So simply you can find 37 का मतलब so 37 से आप 37 से 16 सब्ट्रैक्ट करो, यू गेट 5. सो वो 5 इसको ऐड करो यार. 0 1 1 0 का मतलब 6, 6 प्लस 5 कितना आंसर 11, 11 का मतलब क्या 1 0 1 1 हो गया प्रॉब्लम. ठीक है, नहीं है तो ठीक है. बिकॉज इट इज ए मॉड्यूलर काउंटर, इट विल रिपीट आफ्टर एवरी 16 क्लॉक पल्सेस. इस पे क्या करना, यू शुड डू फर्स्ट 37 क्लॉक पल्स इज इनडायरेक्टली इक्वल टू 37 mod with 16. दैट विल गिव यू रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन एज 5. ठीक है. सो 5 क्लॉक पल्स के बाद आपको जो आंसर मिलते हैं ना 37 के बाद भी सेम आंसर मिलेगा. सो 5 क्लॉक पल्स के बाद कितना आंसर मिलेगा सर, 0 1 1 0 का मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट में 6. इसके बाद 5 क्लॉक पल्सेस काउंट करो, 6 के बाद 7 8 9 10 11. सो आपका आउटपुट तो 11 होना चाहिए. 11 का मतलब बाइनरी में 1011 8421 कोड पे. ठीक है. So after 37 clock pulses, your output is equal to 1011. चलो let's move further. ठीक है. Next question. Try this question. Option D. चलो. So you have a three-stage ripple counter which is having a ripple, okay, means asynchronous propagation delay of 25 nanoseconds, pulse width of the strobe signal. Why the strobe signal is used in the ripple counter? Strobe signal is used to avoid the decoding errors due to the transient states. So एक स्टेज से दूसरा स्टेज पे जाने पे समय पे रिपल काउंटर में सारे बिट्स एक ही बार चेंज नहीं हो पाएगा. सो वन बाय वन ईच बिट चेंज होता है. उस समय पे एक बिट और दूसरा बिट चेंज होने समय पे, फॉर एग्जांपल मेरा आउटपुट इज 3, ये 4 होने के समय पे डायरेक्टली 4 नहीं हो पाएगा. फर्स्ट एक बिट चेंज हो जाएगा, देन इसके बाद एक बिट चेंज हो जाएगा, इसके बाद एक बिट चेंज होके आपको 4 आएगा. ये बीच में जो आ रहा है ना, दिस इज द एरर विच इज टू बी अवॉइडेड. सो टू डिसेबल द आउटपुट टू रीड ड्यूरिंग दिस एरर समय पे, सो क्या करते हैं, हमने स्ट्रोब सिग्नल अप्लाई करते हैं. सो स्ट्रोब सिग्नल का ड्यूरेशन कितना दिया एग्जामिनर, 10 nanosecond. The delay due to the strobe is 10 nanoseconds. So already, so the total delay is given by ntpd plus 10 nanoseconds. N is how much here, 3, tpd is how much, 25. So 75 nanoseconds plus 10 nanoseconds. So the frequency of the clock should be less than or equal to 1 by 85 nanoseconds. So calci
11.76, ठीक है, मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन डी कितना लोग किया, राइट, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। इन रेगुलर क्लास में मैं तो थ्योरी का समय पे डिस्कस किया ये वाला सभी कॉन्सेप्ट्स, ओके। यू कैन सी माय यूट्यूब का और प्लस का क्लास में ये सारे कंटेंट तो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई इट, रीड दिस क्वेश्चन। कहता कि मे बी यू हैव सम इश्यू विद योर इंटरनेट, बाकी लोग को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। थैंक यू भाई वो, ठीक है। बाकी लोग को वो नहीं हो रहा है ना, बफरिंग। बाकी लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए। इज इट एवरीथिंग क्लियर, वीडियो एंड क्वेश्चंस एवरीथिंग? Okay. So, Verma, it is might be your problem with your internet. Fine, Chalo, let's continue. Okay, you have a 10-bit ADC with full scale output voltage of 10.24. It is designed to have plus or minus half LSB accuracy. ADC तो कैलिब्रेशन कहाँ पे किया, 25 डिग्रीज पे। बट ये तो ऑपरेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से 50 तक। सो it can reduce, it is getting reduced by 25 degrees and increased by 25 degrees from its calibrated temperature. So the maximum net temperature coefficient of the ADC should not exceed, क्योंकि here LSB का मतलब क्या, एक LSB equal to 10.24, that is the reference voltage by 2 power 10 minus 1, ये तो approximately ले सकते हैं 10 मिली वोल्ट। सो हाफ LSB क्या होता है सर, इस पे हाफ मल्टीप्लाई करो भाई, ये कितना होता है 5 मिली वोल्ट। सो मेरा एरर 5 मिली वोल्ट से ज्यादा नहीं हो रहा है। सो 25 डिग्रीज जो टेम्परेचर वेरी हो रहा है ना, उस समय पे मेरा आउटपुट शुड नॉट वेरी मोर देन 25, सॉरी मोर देन 5 मिली वोल्ट। सो 1 डिग्री पे कितना तक वेरी हो सकते हैं इज द क्वेश्चन, that is called the temperature coefficient. So in 25 degrees I can allow 5 millivolt। 1 डिग्री पे कितना अलाउबल है भाई, 5/25 into millivolt per degree, that will give you 200 microvolt per 1 degree, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Right. Please give a try, read the question and try to answer it. You have a clock frequency of an 8-bit successive approximation type ADC is 2 megahertz. F clock is 2 megahertz, right? The conversion time for an analog sample to be converted. So what is the conversion time required
for this kind of ADC. क्या हुआ यार, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं. So the time required for conversion in SAR type ADC is n times the time period of the clock, or sometimes by considering the SOC and EOC, you can also say n plus time conversion of the clock. So time period of the clock. So time period of the clock is 1 by 2 microseconds. ठीक है. So n is equal to 8. So it should be, so what is the conversion time? 8 into 0.5. 4 microseconds. 5 can also be answer. Anyway, 5 तो नहीं दिया, so 4 happily आराम से आप लोग ले सकते 4 microseconds. ठीक है. चलो, let's move. Okay. Next question. Option C. Right. Very good, Nishant. ये कल वाला का बाकी क्वेश्चंस करना अभी. Let's start with this question. Try this. ओके निशांत, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप? गुड. चलो, सो ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर. मेरे हिसाब से ऑप्शन ए और बी होना चाहिए. सो लेट्स गिव इट ट्राई एंड सॉल्व इट. ओके. चलो, लिसन हियर. Now see here, this is the question given by examiner.
So here, the op amp shown in the figure is ideal. The input impedance, you need to find V in by I in का relation. ठीक है? So it is having a negative feedback if this node voltage is V in. ठीक है? Uh, okay, directly V in is connected here. This is also V in. Okay. Now, you can also write this node voltage as Vx. Vx is equal to V naught into op amp के अंदर कोई करंट नहीं चलेगा ना R2 by R1 plus R2. That is equal to V in also by virtual short concept. ठीक है sir. So now apply nodal analysis at this node. ठीक है. So I in is entering the node minus I in and plus 0 plus V in minus V naught by Z. Can I say V naught equal to V in into R1 plus R2 by R2? Yes, because I want to find V in and I in का ratio. So मैं V naught को eliminate करना चाहिए. So minus I in plus V in by Z minus V naught का जगह पे V in into R1 plus R2 by Z R2. राइट आपका इन क्या होता है सर वी इन कॉमन ले लो 1/z माइनस R1 प्लस R2 बाई ZR2 ठीक है सो हियर वी इन ZR2 minus ZR1 minus ZR2 by ZR2 LCM ले लिया मैंने so what is V in by in you take ZR2 to the other side minus ZR2 into minus Z अच्छा Z तो एलिमिनेट हो रहा है क्या एक मिनट ओके Z तो ऑलरेडी है ना वेट बस so you take this now other side minus Z into R2 by R1 option B right is it fine minus Z into R2 by R1 as long as yes Nishant it is having the negative and positive दोनों feedbacks right generally we assume there is a possibility of the virtual short okay but if your output is more than we set in that case we assume it is wrong take it as long as your output is not beyond the V set we can apply it because examiner V in का value तो नहीं दिया we assume that V in is such that your V naught is more than not more than V set ठीक है and he has not given the gain we assume it as a infinite it's a combination of both केवल positive feedback दिया तो we cannot apply 100% okay it's a combination of both right ये भी है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो नहीं हाँ ये भी कल नहीं किया ना
Try this question. Any answer? ऑप्शन ये मेरा हिसाब से माइनस आएगा. आई थिंक ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. Okay, chalo, let me solve this, not an issue. Here, same concept, the concept of both the negative and positive feedbacks. Okay, uh, VA equal to VB equal to VS is given by examiner. He is saying that virtual short is applicable. Okay, so you have here also VS. इस पे कोई करंट तो नहीं चलेगा. And this is here we need to find, so this node voltage also Vs. ठीक है. Now you need to find the relation between Vs and Is. Okay, कोई दिक्कत नहीं. Yeah, here also same story. What is Vs, that is equal to Vb at this node. ये नोड का वोल्टेज कितना होता है यही से देखो. आप एम के कोई करंट नहीं चलेगा ना. V नॉट इंटू कैपेसिटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना. 1/SC बाई R प्लस 1/SC. V नॉट बाई 1 प्लस SCR is your Vs. Okay, so ठीक है, that I will use later. Okay, और V नॉट इज इक्वल टू Vs इंटू 1 प्लस SCR. ये बाद में यूज करता हूं मैंने, अभी तो छोड़ दो. ठीक है भाई. 10 किलो ओम का मतलब 10 पावर 4 यार. ओके, 10 माइक्रोफैरड का मतलब 10 पावर -5. ठीक है, अभी तो नोड एनालिसिस करो. इस नोड पे हो गया क्वेश्चन. करंट एंटरिंग द नोड इज Is प्लस Vs. Is is entering ना, माइनस Is प्लस Vs माइनस V नॉट बाई R. ठीक है, दोनों R का वैल्यूज तो सेम है भाई. इज इक्वल टू 0. ठीक है, Is it implies your Is equal to Vs minus V naught by R. Vs minus V naught कितना, V naught कितना, V naught is equal to Vs into 1 plus SCR by R. ठीक है, so I'll use this later. Vs into 1 minus 1 minus SCR by R. That will give you 1 1 cancels, R cancels, minus SC into Vs. So इसलिए मैं R का वैल्यू C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए. until unless, हमेशा ये तो गुड प्रैक्टिस होता है, आप R एंड C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो. केवल वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम सॉल्व करके एंड पे R एंड C वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो आपका एनालिसिस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, टाइम सेव हो पाएगा. चलो, लेट अस सी हियर. So minus
SC, so minus J omega into C into Vs is your Is. So what is that? Vs into omega C angle minus 90 degrees आ रहा है. So Is का मतलब Is का value is not leading, lagging by 90 degrees. केवल एक ही option lagging पे है, that is option D. चाहिए तो आप value भी निकल सकते. So Vs कितना दिया 10 RMS value, ओमेगा कितना 2 pi into f कितना 15 into C कितना 10 power minus 5, that will give me 2 5 so 2 pi into okay uh, ये तो कितना 10 power minus 5 10 2 pi, ये तो दो दो जीरो जाएगा, then 2 pi millivolts. 10 pi मिली, दो और पाँच ले लो भाई, 2 5 कितना 10 पाई, ये तो जीरो जीरो -3 हो जाएगा 10 पाई मिली एम्पियर बस. Okay, so only one option is giving you that condition, that is option D. Now due to the op amp you can understand like this here, capacitor तो okay lead दे सकते हैं 90 degrees, op amp will give you 180 degrees lag, so the net can be anything. ठीक है, because the op amp input is based on your op amp condition. Okay, suppose here uh, op amp is also will provide you some this one ना, क्या बोलते हैं phase shift, both you should consider, the result is net result. केवल कैपेसिटर आपका नेटवर्क पे है, आपके पास ऑप एम्प नहीं है, तो in that case you never get the lag answer. चलो ये क्वेश्चन तो नहीं किया. किया ऑलरेडी. ओके ओके. मैं तो याद नहीं. यस, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस इज ए गुड क्वेश्चन यार. आशीष लेट्स सी. ठीक है. Any answer guys?
No answer? Anybody? It's really not difficult question here if you start doing the analysis. Okay, I'll do it. Assume only V2 applied for this. ठीक है, इस पे 10K, ये बाकी सभी क्या होता है सर? Grounded. ठीक है, and this is also 10K. Here also सारे values grounded, सभी grounded है. ये नोड वोल्टेज कितना? 0. तो आपका V0 कितना होता है सर? केवल V2 अप्लाई किया, ये वर्चुअल शॉर्ट से ये नॉट भी 0, इस पे कोई करंट नहीं चलेगा बिकॉज 0 बाई माइनस 0 बाई, सो इससे कोई फायदा ही नहीं है. सो व्हाट इज योर V0? माइनस 10K बाई 10K into V2, that is minus V2. Similarly, only V3 अप्लाई किया तो भी your V0 is equal to V3. So what is the V0 when all V0 this one V2 V4 V6 ये सभी अप्लाई किया तो आपका V0 क्या होता है सर? माइनस V2 माइनस V3 sorry minus V3 V4 only even part minus V6 and so on. But V2 V4 V6 क्या होता है? -1/2 -1/4 -1/6. According to this, minus of minus 1/2 1/4 1/6 and so on. So this is what happens when only ऊपर वाला इनपुट्स अप्लाई किया. तो अभी तो नीचे वाला इनपुट अप्लाई करके चेक करता हूं. ठीक है, then only V1 केवल V1 अप्लाई किया तो क्या होता है? ये तो 1K बाई, ठीक है. सो V1 यहीं पे अप्लाई किया 1K. नाउ व्हाट हैपेंस, ये सभी रेसिस्टर्स आपको पैरेलल पे आ रहे हैं. ठीक है, एंड हियर यू आर अप्लाइंग द इनपुट 10K एंड ये 10K 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 जैसा सभी रेसिस्टर्स पैरेलल पे आ रहे हैं. ठीक है, then what is your V0 now in this case? So firstly, if you take this node voltage as Vx, ठीक है, this will be Vx and V0 equal to 1 plus 10K by ये पूरा कितना, because it is total is n, इस पे अर्धा n/2 ले लो, n/2 ले लो. So n/2 into what is that value? 10K. ठीक है, sorry. If you have n/2 number of resistors in parallel, overall equivalent is 10K by n/2 into Vx. This will give me 1 plus n/2 into Vx. ठीक है, चलो. Now listen here. Here, what is Vx? Vx equal to V1 into ये पूरा कितना होता है सर? 1K by n/2, because here total resistors are n plus 1. You can see ये n/2 और 1. ठीक है, सो टोटल रेजिस्टर्स आर n/2 plus 1. इसमें ओके फर्स्ट पे इनपुट किया, बाकी n/2 आर इन पैरेलल. So it is total resistance by number of resistors because they are equal. 1K by n/2 by 1K plus 1K by n. Sorry, 1K plus 1 minute. If you assume this as two resistors, guys,
This is one resistor and this one resistor total into this particular impedance by total impedance 1k plus 1k by n by 2. So 1k to जाएगा V1 into here. What do you get? 1 by 1 plus n by 2. So what is equal to Vx, that is 1 by 1 plus n by 2 into this one 1 plus n by 2. So n by 2 n by 2 जाएगा and ideally whatever you gave you will be getting. So what is your V02 is V1 दिया तो V1 आएगा, V3 दिया तो V3 आएगा, V4 दिया तो V5 आएगा, which is 1 plus 1 by 3 plus 1 by 5. Overall V0 equal to superposition of V1 V02. That will give me 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 and so on. As n tends to infinity, this value will approach infinity, this series, but our output cannot be infinity, it will go to the maximum V set. इसके बाद it will saturate. So मेरा output कितना होता है sir in this case? Plus 15 because he has given that. Okay? Anybody have any doubt? Feel free to ask me. I am happy to help you. So एक बार ये सोच लो यार, क्वेश्चन देखने समय पे हर क्वेश्चन ऐसा दिखते हैं, अरे भाई बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मन भी नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. मेनी स्टूडेंट्स डोंट रीड दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, ये सभी वन बाय टू देख के छोड़ते. सम पीपल हाफ ऑफ पढ़ के दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड दे सॉल्व एंड दे वेस्ट द टाइम. इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एनी एग्जाम पे, एनी सब्जेक्ट पे 50% of your problems are solved. Okay, always start with confidence. Once you start you understand, अरे भाई इसमें ज्यादा दिक्कत वाला काम ही नहीं है, बहुत आसान. ठीक है, इज इट फाइन? चलो आज के लिए इतना ही है, फिर कंटिन्यू करते कल क्लास पे. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. सो एनी नो डाउट ना, इट इज जस्ट ए नोड इक्वेशन, वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल आपको सही से पता है तो यू कैन सॉल्व इट इजीली. ओके, n2 कुछ नहीं n. Shall we solve one more question? Last question. Okay, let's solve this and end the class. स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं निशांत, ये क्वेश्चन पे टाइम लगेगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डोंट नो नीड टू वरी. सारे क्वेश्चंस तो 1 मिनट पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, मेरे को भी पता है. या अगर नेटवर्क में सुपरपोजिशन आप सोच लिया तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. आप ये मत करना सारी इनपुट्स अप्लाई करके नोड इक्वेशन से सॉल्व करना मत ट्राई करना उसको इसमें. सो दिस सीरीज को आज से मैं 5 ले रहा हूँ, फिर अगेन आई विल कंटिन्यू दिस. मे बी we'll see, maybe after a 1 week gap we may restart again this one. Right, so let's try this question. आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए. स्टडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सर्क्यूट विल बी, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं. चलो, दिस नोड वोल्टेज 0. ओके, दिस नोड वोल्टेज भी 0 होता है. ठीक है, इस पे कितना करंट चलेगा? 0.1 माइनस 0 बाई R1. इसमें कोई करंट नहीं चलेगा ना, सो इसमें भी सेम करंट चलेगा. सो कांस्टेंट करंट कैपेसिटर में जा रहा है, आपको वोल्टेज मिलेगा VC. V0 is equal to minus VC. VC equal to, because there is no initial value, 1 by C1 into 0 to T. करंट कितना? 0.1 by R1 dt.
So 0.1 by R1 C1 into dt. ओके इंटू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो टी होता है बट आपका वी नॉट क्या माइनस वी सी सो माइनस 0.1 by R1 C1 into t. It's a unbounded value. Yes or no? The value will be increasing like this, like this, like this. Okay. So at t equal to R1 C1 will reach 0.1. The same way it will be going in the negative. This is your V naught. Okay. But it cannot go up to infinity as time increases because is particular op amp ka limit, the maximum it will go is minus V double. But after V sat, so originally it will increase and it will stop at minus V double. इसके बाद the output cannot increase beyond V sat, as you people knows, right? Right. That is the last question for today's class. Thank you very much for your time, guys. I hope you enjoyed the session. सो स्कॉलरशिप टेस्ट है संडे पे आप लोग इस पे एनरोल करो यार 11 AM पे यू कैन गेट द स्कॉलरशिप अप टू 90%. द लिंक इज अवेलेबल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. ओके. आपको अनअकैडमी से कोई हेल्प चाहिए तो आपको फाइनेंशियली कुछ डिफिकल्टीज है तो आप इस पर नंबर पे कॉल करो. यू विल बी गेटिंग द हेल्प फॉर अवेलिंग द लोन. Okay, so you can just have hardly 6 months in your time. You plan properly from where you want to continue your preparation, whether it is on the plus or YouTube, whatever may be the take the decision, and prepare with consistency. Definitely, you'll be able to succeed for sure. So कल से एक नया बैच भी शुरू हो गया, उम्मीद बैच for 23 aspirants. If you want, you can start your journey with by taking the subscription in that. Always, you can use my code Shankar10 for getting the maximum possible discount. As last day to save up to 44%, that offer is also running. Thank you very much. See you all. Good night.